Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let's back to our online classes. Let's see chapter number 12 Statements in QB64. Okay? प्रीवियस चैप्टर में हमने QB64 का इंट्रोडक्शन सीखा था. इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स which we are using in QB64. Okay? So, let's start. First, QB64 statements. The instruction or commands in QB64 are called statements. What is statements? The instructions or commands in QB64 are called statements. QB64 statements are constructed using keyword and the syntax specific to it. The combination of statements forms a program code. It is important to follow the correct syntax in the coding statement, as otherwise the QB64 compiler will point out the error and the program will not get executed. Okay? हमें कंपल्सरी जो उसकी करेक्ट सिंटेक्स है कोडिंग की उसको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज QB64 compiler will point out the error and the program cannot be executed. REM, RAM, let, print, input and are some examples of QB64 statements. The commands and statements we learn in this book will work the same way in any version of BASIC. Okay. Let's see first statement, RAM statement. A RAM statement is found generally in the beginning of the QB64 program code. It is used to describe a program and to identify various parts of program. The purpose of this statement is to give proper documentation and understanding to the reader of the QB64 program code. Okay? RAM statement का हम कहाँ पर यूज करते हैं? It is generally found in the beginning of the QB64 program code. Using RAM statement हम हमारा जो प्रोग्राम है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इट मीन्स कि यूजिंग रैम स्टेटमेंट हम नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं. इट मीन्स कि अगर आपने कोई अपने प्रोग्राम में कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म किया है तो डायरेक्टली अगर कोड हमें दिखाई देगा तो हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये कोड किसके लिए है. तो सिंपली हम इन बिटवीन द प्रोग्राम लाइन राइट डाउन कर सकते हैं यूजिंग रैम स्टेटमेंट कि ये जो कोड है उसमें हमने एडिशन किया है या फिर सब्सट्रैक्शन किया है. ओके, ऐसी कोई भी नोट्स हम यूजिंग रैम स्टेटमेंट राइट डाउन कर सकते हैं. You can put a RAM statement alone in a line or you can put it in a line following another statement. If it is follow another statement, the RAM must be separated from this statement by a space. There is no restriction to the number of times you can use it in QB64 program code. The QB64 compiler ignores any statement written after RAM and that is not taken in any processing. Okay, see the syntax: RAM, then after comment or command. Okay, when RAM keyword follow other statement on a line, it must be separated from the statement by a colon. The colon is not required after other statement when apostrophe is used. Okay, then after end statement. The end statement in QB64 program code indicates the end of the program. End statement क्या indicate करता है? The end of the program. Any statement written after end will not be executed. जो statement आप end statement के बाद अगर राइट डाउन करते हो तो वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता. ओके, देन आफ्टर है लेट स्टेटमेंट.
Let statement is also called a assignment statement. It is used to assign value to a variable. Let statement का क्या यूज होता है और let statement को हम क्या कहते हैं? It is also called assignment statement and we use let statement to assign value of a variable. Okay. The variable may be either a numeric variable or a string variable. The expression may be either arithmetic expression or string expression. String cannot be placed into numeric variables or vice versa. हम जो string की वैल्यू है उसको numeric variable में assign नहीं कर सकते. The following are example of let statement. Let A is equal to 109. Let B dollar is equal to keyboard. It means कि जो 109 है वो है numeric variable A और जो keyboard है वो है string variable B. Okay. The usage of let statement in QB64 is optional, but it is recommended to always use it. Let's see syntax. Let, then after variable name and value or expression. Okay. For example, let x is equal to 7. These assign value of 7 to variable called x. Then after let total is equal to x plus z. This will add value of x and z and assign the sum to a variable name total. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर x and z दोनों वेरिएबल का सम होगा और जो आंसर है वो कहाँ पर स्टोर होगा? वेरिएबल टोटल में. ओके. देन आफ्टर है लेट फ्रूट dollar is equal to apple. This statement will assign value apple to the string variable fruits dollar. यहाँ पर fruits dollar जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू असाइन होगी apple. Okay. See example. First है cls command, clear screen. Then after rem find the product of two numbers. यहाँ पर हमने एक नोट राइट डाउन किया है. ओके. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. यहाँ पर हमें क्या परफॉर्म करना है? टू नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ओके. लेट x इज इक्वल टू 8. let y is equal to z. Let z is equal to x multiplied by y. Then print 2 and AND statement. Okay. The program to find the product of two numbers. See the output. Your output is 16. Okay. Then after next statement is print statement. Print statement is used to display numbers, values of variables or messages on the computer screen. Print statement का use कहाँ पर होता है? Display numbers, value of variables or messages on this computer screen. Okay. Let's see the syntax. First print, then after constant or string constant or variable or expression. हम यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं. ओके. लेट्स सी द एग्जांपल. प्रिंट 6 multiply by 8. This will display 48. The product of 6 and 8. यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा? 6 multiply by 8. It means कि 48. Then after print welcome to the world of QB64. This will display the message welcome to the world of QB64. Okay. Then after print Z. This will display the current stored value in variable Z. जो variable Z में currently stored value है वो यहाँ पर print होगी. Let us now look at 3 variants of print statement. Let's see first one, using print with comma. Using print with comma. In order to have spaces between the display output,
Use the comma between multiple variable to be displayed in the print statement. Default is 14 spaces. How many spaces? Default 14 spaces. Okay. Note that maximum of 5 value can be displayed in a line when comma is used. Let's see syntax. First print, then after variable 1, variable 2, variable 3 up to n numbers. Then after example, print good, and then after morning. Okay, will display good morning with 14 spaces between them. यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा? 14 space in between good and morning. Okay, let's see the code. First clear screen command, then after rem using print with comma, then after let a is equal to 7, let b is equal to 8, c is equal to 4 and d is equal to 9. Then after print a, b, c, d and end statement. Then after press function key F5 to run the program as seen in figure 2. See here, our output is using comma 7, then after space, then after 8, then after space and then after 9. Okay. Then after use print with semicolon. In order to have one space between the display output, use the semicolon between multiple variable to be displayed in the print statement. यहाँ पर हम क्या use करेंगे? Semicolon. Okay, see the syntax. Print variable 1, then after semicolon, variable 2, again semicolon, variable 3, semicolon up to n numbers. Okay, then after example, print good, then after semicolon and morning, semicolon and friends. Will display good, then after space, then after morning, then after space, friends with one space between each printed variable. How many space here? One space. Okay. See example, clear screen using print with semicolon. Let a is equal to 7, b is equal to 8, c is equal to 4 and d is equal to 9. Then after print a semicolon, b semicolon, c semicolon and d and end statement. Okay. The output, press function key F5 to run the program. The clear statement in the beginning clear the screen of any previous output. And see here in figure 3b, our output 7, then after one space, then after 8 again one space, then after 4 again one space and 9. Okay. Using print with tab function. In order to begin the display output from the desired column, use tab function between multiple variables to be displayed in the print statement. Let's see syntax. First print, then after tab, column number, semicolon, variable 1, semicolon, variable 2, semicolon, then after variable 3, semicolon up to n numbers. Okay, see the example. First print tab, then after column number 20, then after value good, semicolon morning, semicolon friends. Will display good morning friends starting from column 20. Okay, हमारा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से प्रिंट होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 20. See the example, clear screen, then after using print with semicolon,
let a is equal to 7, b is equal to 8, c is equal to 4 and d is equal to 9. Then after print a semicolon, b semicolon, c and d. Okay. Press function key F5 to run the program and see here our output, print output using tab function. यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट कॉलम नंबर 20 से प्रिंट हुआ. ओके. Then after input statement. Okay. The input statement is used to accept a data item from the user while the program is running and store it in a variable when we use input statement a computer. Okay. Input statement का क्या यूज होता है? जब हमें रन टाइम यूजर से कोई डेटा इनपुट करवाना होता है और उस डेटा को वेरिएबल में स्टोर करना है, तब हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना लॉगिन करते हो किसी भी वेबसाइट में, तो आपको क्या मिलता है? फर्स्ट आपको अपना ईमेल और पासवर्ड उसमें डालना पड़ता है. इट मीन्स कि वो यूजर साइड से डेटा गेट करता है. तो किसकी मदद से ये होता है? यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट. ओके. 6 इनपुट फ्रॉम द user by displaying a question mark on the screen. Stop further execution of the program and waits for the user to key in respond and press the enter key. The information or the data entered by the user gets stored in a variable name mentioned in input statement. See the syntax. Input variable 1 semicolon variable 2 semicolon variable 3 semicolon up to n numbers of variables. Okay. The above syntax usage will display just a question mark and user will not know what to input. Thus, in actual practice, you would use it in combination with string constant as so in example below. The example: first, clear screen. Then after RAM, find the sum of 3 numbers. यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करेंगे? Find the sum of 3 numbers. Then after again RAM, this is a program to print the sum of 3 numbers entered by the user. मीन्स कि यूजर जो 3 numbers इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या करेंगे? सम करेंगे. ओके. तो हर एक यूजर अपना अपना अलग अलग नंबर ऐड करता है. तो जो नंबर यूजर ऐड करता है वो हम इनपुट स्टेटमेंट की मदद से वेरिएबल में स्टोर करते हैं. देन आफ्टर उसका सम होता है. ओके. सी इनपुट स्टेटमेंट एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन आफ्टर वेरिएबल ए. इट मीन्स कि जो फर्स्ट नंबर यूजर एंटर करेगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? वेरिएबल ए में. ओके. Same, enter the second number in variable B. Then after again enter the third number in variable C. Okay. अब यहाँ पर A, B और C वेरिएबल में यूजर ने जो नंबर इनपुट किया वो स्टोर हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? इन सब नंबर का सम करना है. सो let D is equal to A plus B plus C plus D. यहाँ पर क्या होगा? सम होगा. जो हमारे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है उसका एडिशन होगा. देन आफ्टर प्रिंट द सम ऑफ द 3 नंबर इज D एंड एंड स्टेटमेंट. ओके. जो सम हमारा होगा उसकी वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी? वेरिएबल D में. और यहाँ पर वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी. ओके. The use of print without anything written after the statement will generate one blank line. Then after press function key F5 to run the program. Okay. यहाँ पर let के नीचे जो हमने print statement write down किया है वो किस लिए किया है? एक blank line छोड़ने के लिए. Okay. Then after press F5 key to run the
See the output. Enter the first number. First number क्या enter किया? 21. Then after second number 23 and third number 45. Then after blank line and print statement, the sum of the three number is यहाँ पर 89 डिस्प्ले होगा वेरिएबल डी की वैल्यू. ओके. Now try the above program without the string constant and notice only appearance of question mark. It becomes difficult to run the program with prompt coming because of string constant in code given below. The usage of input statement using both numeric and alphanumeric variable as shown. Okay. See here. Program to find percentage score by student. Then after clear screen, one print, blank print, it means कि एक लाइन यहाँ पर हम blank छोड़ेंगे. Then after print, a program to find the percentage obtained by students in final exam. Input, enter the name of the student, store in variable name, enter the marks obtained in English. Then after in language, science, SS, mathematics and information technology. Okay. Then after here the formula of percentage. Percentage is equal to sum of all subject marks divided by 600 into 100. Then after again one blank line and print statement. Percentage of marks obtained by यहाँ पर नेम की वैल्यू प्रिंट होगी. इट मीन्स कि स्टूडेंट नेम प्रिंट होगा. देन आफ्टर इज एंड देन आफ्टर परसेंटेज ऑफ द यूजर. ओके. आउटपुट. If the value entered at the runtime does not match with the type of the variable specified in QB64 program code, a message appears on the display screen stating redo from start. It simply means that re-enter all values again. अगर आप अपने वेरिएबल में आप इनपुट स्टेटमेंट में जो यूजर को वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू आप ऐड करोगे तो वो अगर रन टाइम जो आपने वैल्यू ऐड की है वो वेरिएबल टाइप से मैच नहीं होगी तो आपको एक मैसेज मिलेगा अपनी स्क्रीन पर रीडू फ्रॉम स्टार्ट. इट मीन्स कि re-enter all the value again. Okay. Then after press F5 key to run the program. The output of the above code is shown in figure 6b. Let's see. Enter the name of the student. Here answer Mala. Then after marks of every subject in English 99, in language 98, science 95, SS 90, mathematics 100 and in IT 99. Then after blank line and percentage of the marks obtained by Mala is 96.83%. Okay, so it is our answer. I hope you all understand this concept.